Good morning students. This is PN sir and you are watching PN's Biology. Joy Jagannath. Today we'll start the new chapter of plus 2 secondary science botany, that is sexual reproduction in flowering plants. पढ़िबा आमे कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो फर्स्ट लेक्चर राइट. आज पढ़िबा से ता देरे कोन पढ़िबा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये दीटी पढ़ी कवर करिबा राइट. मूलर आमे लिखि देले लेट अस स्टार्ट. फ्लावर देखिछो, फ्लावर माने फूल. फूलटा कोन विभिन्न गछरे विभिन्न फूल देखिछे. फूल गुडाकर सेक्स ऑर्गन दुईटा को गोटे लेखा फ्लावर प्राय थाए. मैक्सिमम फ्लावर दुईटा को सेक्स थाए फ्लावर से बाइसेक्सुअल कहुए राइट. फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, यूजुअली बाइसेक्सुअल. बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर. फ्लावर रो मेल पार्ट टाक सेक्स कहते एंड्रोइसियम, फीमेल सेक्स कहते गाइनोइसियम. सो बोथ ऑफ द मैक्सिमम फ्लावर रे थाए दीटा को सेक्स ऑर्गन थाए. इज दैट क्लियर? सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. गोटे फ्लावर स्ट्रक्चर नवा ता भीतर को पार्ट को कौन कहते से गुडा आम जानि नवा. वेरी इजी, very easy. Let us start. Right? The structure of flower. Structure of flower. Right? Guys, look at me. जमती मु ड्रॉ कर बहुत इजीली. You can draw. जदि मो हाथ टाक मार कर तुम ड्रॉ कर इजिली ड्रॉ कर राइट. देखो वेरी फनी. यू कैन टेक द टाइम, वॉच द यू कैन मार्क योर वॉच एंड यू कैन केम टू नो दैट हाउ क्विकली आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम and nicely also. Simply you can do like this, right? Then another petal like this, right? Then another petal like this, right? Then another petal like this, okay? Then the last petal like this. Clear? So from this, what you will do, look at me. From this region, take very simple and very clear cut diagram of a flower. You will see the flower very simple flower. Is it looking nice? सुंदर दिसछि ना? Let us draw, label it. तो लेबलिंग करिबा को पार्ट कोन कहते. देखो दिस इज पेडिसेल. Dempher. This part, just above to before to that, we have to go for this. Thalamus. Calyx.
corolla, androecium, gynoecium, calyx, singular, sepal, singular, petal, singular, stamen, singular, carpel. Very nice. It is looking so nice, gorgeous. So very clear cut flower is here. So ओडिया रे कहले आर डेम्फो तार थालामस कहले जो गुडा कटी मुंडी भुंडी बोली थाए ता खांदी पाटी मीठा मीठा लगे तार सब फूलर ऊपर गोटे ग्रीन कलर कवर थाए ता कहते कैलिक्स ता ऊपर को पाखुड़ा थाए पाखुड़ा कहते करोला पाखुड़ा ऊपर एमती जो केसर भाया थाए ताको कहते आंड्रोइसियम पूरा लास्ट अगर जो टिके थाए ताको कहते गाइनोइसियम सरला यही कैलिक्स रो सिंगुलर गोटा को कहती सेफाल आर गोटे पाखुड़ा कहते पेटाल प्रॉपर पाखुड़ा आर गोटा को कहते स्टामेन आर गोटा को कहते कार्पेल. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. वेरी सिंपल आ पेडिसिलेला डेम्फो राइट. सो आदर आउ टिके कौन जानिबा दिस इज मेल सेक्स पार्ट दिस इज फीमेल सेक्स पार्ट राइट. मेल सेक्स पार्ट फीमेल सेक्स पार्ट. ओके these are infertile. This is infertile. Calyx is infertile, corolla is infertile, androecium is fertile, gynoecium is fertile. माने जन्म क्रिया शक्ति अच्छी. Finished. This is all about the structure of flower. Finished. Let us know. तापर देखिबा development of male gametophyte. Development of male gametophyte. What is male gametophyte? Male माने पुरुष राइट. Gametophyte माने जो मेल पार्ट देखले आंड्रोइसियम से आंड्रोइसियम गोटे पाक स्टामेन से नवा देखिया करिया कौन करछन ता भीतर केंति मेल गैमेट सब हुए. मेल गैमेट माने पोलन ग्रेन प्लांट मानकर मेल गैमेट को पोलन ग्रेन को जाए से पोलन ग्रेन केमि तयारी करछथि पोलन ग्रेन को से विषय में देखिनवा. लेट अस सी हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स. सो डेवलपमेंट ऑफ male gametophyte प्रथम पढ़िया मेल गामेटोफाइटा केमिति डेवलप करुछि. आदे देखिए कौन कौन ना देखिए तीन टा जिनस देखिए कौन देखिबा ये रे. First one, stamen, that would single unit of androecium, stamen. B रे ता भीतर जे प्रोडक्शन करे ता कहते माइक्रोस्पोरांजियम सिंगुलर ता प्लुराल टाला माइक्रोस्पोरांजिया जिया टाला प्लुराल जियम हेले सिंगुलर. सो माइक्रोस्पोरांजियम Cirella male gametophyte or pollen grains. Pollen grains or male gametophytes. सो ये तीनोटी आम देखा क्लियर. प्रथम देखिए स्टामेन. लेट अस नो व्हाट इज स्टामेन. ये रे स्टामेन देखिए आर पूर्व डायग्राम करवा
stamen ro diagram jodi kara very quickly you can draw the structure of stamen, the figure of stamen like this. Very clear cut. What are the labelings? This is called as anther. Anther. This is filament. Filament or style. Right? So this is the structure of stamen. Stamen गोटे structure नहीं है, simple structure नहीं है, गोटी stamen रो single unit नहीं है, ता structure देखले ऊपर दे दिया है double दीटा अच्छी, तो कहते anther bilobed and गोटे stalk अच्छी, तो कहते filament or style, नोड़ी, right? तापर को जीवा, तापर पर कौन पढ़िबा हमें देखिबा structure of anther, ये anther रो structure नबा देखिबा, ये anther पूरी structure करिबा, structure of anther. Structure of anther. ये anther structure नबा आर ये cross section नहीं जीवा cross section CS और CS नहीं cross section नहीं देखिबा ता भीतर कौन अच्छी देखिबा इधर को आ भीतर नेल देखिले very interesting very funny. You can see how quickly I am drawing the diagram. तमें भी करि परिबो एमति करि पर खाली एमति एमति मु करू जेमति आंगुठी बुलउची हाथ सेमति तम माने बुले परिबो बहुत इजी right. Another layer is there. ओके क्लियर आ भीतर पुणी आउ दुईटा लेयर अच्छी यार ये कहली टैपे टर्म्स हो ये गोटे अलग कलर करदे कि आ गोटे अलग कलर करदे ग्रीन ने करदे ओके आ भीतरटा को भी करदवा कौथरे ना ब्लैक रे करनवा क्रॉस सेक्शन हे गला अच्छा लेबलिंग करबा ए क्रॉस सेक्शन कोन लेबलिंग करा दीटा लोब ये गोटे लोब ये गोटे लोब ए गोटे लोब तने एटा गोटे लोब एटा लोब जे मझिर जे कनेक्ट करछ कने कनेक्टिव कोन कनेक्टिव फर्स्ट लेयर टा कोनथि एपिडर्मिस आउटर लेयर एपिडर्मिस एपिडर्मिस राइट सेकेंड लेयर टा कोनथि एंडोथेसियम एंडोथेसियम सेकेंड लेयर endothecium right the second layer fibrous epidermis protective covering this is fibrous covering fibrous layer right eta fibrous seta la protective covering third layer कोचे कोन middle layer कहीं मिडिल ना ऊपर दीटा भीतर दीटा अच्छे मझे सी अच्छे से मिडिल तुम भाव तो तीन टार मिडिल यहाँ नो
ऊपर देखे तीनटा एटी दीटा अच्छे पांचटार मिडिल थर्डटा हूँ मिडिल सो कॉलेज मिडिल लेयर वेरी सिंपल मन रखा इजी हो गला ता नेक्स्ट लेयर टैपेटम नेक्स्ट लेयर टैपेटम राइट ता भितर जो गुड़ा रहा टिश्यू ता भितर को जो रहा ताको कौन लिखले स्पोरोजिनस टिश्यू सो स्पोरोजिनस टिश्यू ये जो रहा कनेक्टिव राइट सो कनेक्टिवटा दीटा को लोब को जॉइंट करुच्ची देख प्रत्येक लोब रे दीटा लेखा स्पोरोजिनस ट्यूब अच्छी तो मैंने चारिटा स्पोरोजिनस टोटाल अच्छी दुईटा लोब रे प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू को गोटे टैपेटम बा आउटर कवरिंग कवर कर रखी एनक्लोज कर रखी फॉर प्रोटेक्शन बेटर प्रोटेक्शन तापर कौन है ता भीतर को आम कौन करे ना आउटर एपिडर्मिज लेयर एपिडर्मल लेयर आउटर एपिडर्मिज इट इज फॉर प्रोटेक्शन दौची जो सेल तैयारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स रे ये प्रोटेक्शन पे साहाय्य करछि कौन करछि प्रोटेक्शन दौची ओके सेकेंड लेयर एंडोथेसियम ये गोटे स्पेशल टाइप ऑफ सेल अच्छी कौन अल्फा सेलुलोज फाइब्रस अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स कौन ये अच्छी अल्फा CLLULOSIC लोजिक फाइबर्स अच्छी ये कौन गोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो नड़ियार कथा था ये सेमती ये कर प्रोटेक्शन ये मजे रोचे थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर कौन 1 to 3 layers 1 to 3 layers of cells एक रु 3टा लेयर सेल अच्छी से जो मैच्योर्ड सब डिसइंटीग्रेट कर सेल गुड़ाक राइट जो व्हेन इट विल गेट मैच्योर्ड then the cells will disintegrate right next tapetum is the outermost covering of the that is sporogenous cell sporogenous tissue connective is connecting to the connective tissue gote dita lobe को connect करुछि this is all about the structure of anther ts structure this is ts transverse section or cs बर्तमान आपर आम देखा कौन ना आर भितर ये जो रहा स्पोरोजिनस टिश्यू आ भितर कौन कहे माइक्रोस्पोरांजिया तैयारी होची माइक्रोस्पोरांजिया बोले मेल सेक्स गैमेटिक सेल्स माइक्रोस्पोरांजिया स्पोरांजिया भितर पोलेन ग्रेन गुड़ाक तैयारी हेबो से माइक्रोस्पोरांजिया गुड़ाक केमी देखा आम तार स्ट्रक्चर नवा आ भितर जो माइक्रोस्पोरांजियम अच्छी स्पोरांजियम कहले सिंगल गोटे माइक्रोस्पोरांजियम आम स्ट्रक्चर नवा आर स्ट्रक्चर टाक देख स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम बी कैपिटल बी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम राइट आर स्ट्रक्चर यदि नवा ये 3टा लेयर अच्छे 5टा लेयर आसो कौन आदि अच्छी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ एगेन ड्रॉ करिया पड़े हमको ये गोटे लेयर कर सेल कहली ये 1 लेयर ऑफ सेल्स ता भितर आउ गोटे लेयर ऑफ सेल्स अच्छी ऊपर आउ गोटे लेयर ऑफ सेल्स अच्छी एपिडर्मिस एंडोथेसियम
मिडिल लेयर तीन टाक लेयर कर देली तीन टाक लेयर कर देली तीन टाक लेयर पर टैपेटम हमें कौन करिया वर्तमान अनदर लेयर करिया टैपेटम टैपेटम भीतर को यदि जीवा कौन करिया माइक्रोस्पोर मदर सेल गुड़ाक माइक्रोस्पोर मदर सेल एतिक ओके एगुड़ाक यदि लेबलिंग करवा से एक्जाक्टली एपिडर्मिस एतिक करवा एंडोथेसियम middle layer right middle layer then tapetum microspore mother cell MMC राइट देखिए आम एगुड़ाक कहार कौन काम ये लिखी एपिडर्माल सेल रो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन तार काम कला कौन प्रोटेक्शन तापर अल्फा सेलुलो जोइक फाइबर्स आर अल्फा फाइबर्स देन ये 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स राइट माइक्रोस्पोर्स ये कौन करे आर दी तीन टा काम अच्छी सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू राइट सेकेंडरी नॉरिसेस द स्पोरोजिनस टिश्यू खाद्य भी सप्लाई करे फूड नॉरिसेस NURS SHI yes nourishes the sporogenous tissue दीटा है develop the pollen grains also थ्री फंक्शन ता फंक्शन गुड़ा भी लिखिदेली बहुत इजी है आ साइड रे तार फंक्शन लिखाई तुम ता तले लिखा बहुत इजी नोट लिखा तुम भी कार फंक्शन कौन लिखे प्रोटेक्टिव कवरिंग एंडोथेसियम इट इज अल्फा ग्लाइकोसाइड फाइबर्स 5 middle layer it is 1 to 3 layers after disintegrated after maturity getting maturity microspores तीन टा फंक्शन surrounds the sporogenous tissue nourishes the sporogenous tissue and develop the pollen grains finished तले लिखिदेल हो गला बेचे लॉन्ग क्वेश्चन हो गला राइट आर भितर प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू गुड़ाक थाए क्या भितर माइक्रोस्पोर मदर सेल भितर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कौन थाए ना प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स देख प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एमाने कौन दियंती दे कैन फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दे कैन गिव राइज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स
MMC, राइट एमाने माइक्रोस्पोर मदर सेल देले आपर मेयोटिक डिवीजन माइक्रोस्पोर मदर सेल टार मेयोटिक डिवीजन मा मेयोसिस हेकरी गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल सी देव चारिटा हाप्लॉइड सेल देव वन माइक्रोस्पोर मदर सेल विल गिव राइज ये टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड फास्ट microspore tetrad, right? Then microspore tetrad will give rise the pollen grains. The pollen grains, right? So this is very simple process how the sporogenous tissue they are forming the pollen grains. This is a very clear cut structure. You can take the स्क्रीन शॉट राइट लिभेबा आम पढ़ी सारे कौन ना माइक्रोस्पोरांजियम पढ़ले पोलेन ग्रेन विषय पुणी पढ़ा थर्ड टाक लिभेबा को ना कौन कौच लिभेबा और मेल गैमेटोफाइट्स पोलेन ग्रेन रो कौन थाए ना तार गोटे आउटर सरफेस थाए आ इनर सरफेस गोटे थाए आउटर टा कहते एक्जाइन इनर टा कहते एंटाइन ना दुईटे सरफेस तार थाए दुईटे मेम्ब्रेन थाए पोलेन ग्रेन रो स्मॉल ए एक्जाइन बी इंटाइन राइट एक्जाइन एंड इंटाइन जदि एक्जाइन प्रथम पढ़ा आम एक्जाइन लेट अस नो अबाउट द एक्जाइन फर्स्ट एक्जाइन एटा एक्जाइन मेल गैमेट बा पोलेन ग्रेन रो बाहर सरफेस टाको कहते एक्जाइन से एक्जाइन टा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड रे तैयारी होता है ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जैविक केमिकल कंपाउंड रे तैयारी थी very interesting you have to remember sporopollenin you have to remember तो पूरा क्लियर मन रखा पड़ो एक्जाइन कले मेल गैमेट रो आउटर कवरिंग कहुए से कवरिंग टा गोटे केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयारी ता ना होची sporopollenin what this is called as you have to remember very important यू हैव टू रिमेम्बर ये स्पोरोपोलेनिन टा करे कौन ये स्पोरोपोलेनिन रो फंक्शन जे देखिबा दी तीन टा मेजर फंक्शन ये फसिलाइजेशन करे जदि फसिलाइज हो जाउछ प्लांट ना ये स्पोरोपोलेनिन थाए से हम फसिल स्टडी करि परिबा राइट स्पोरोपोलेनिन टा गोटे केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिछ मु सेटा थाए सेठी आ सेकंड जे देखिबा कोन करे ना प्रोटेक्शन भी करे कौन करे अरे बाप रे ये भी प्रोटेक्शन कर मेकानिकल सपोर्ट दूसरी थर्ड वन इज मोर इंटरेस्टिंग थर्ड कैरेक्टर व्हाट इज दैट थर्ड कैरेक्टर ओवरऑल इट इज गिविंग सपोर्टिंग द viability of production of baby capacity of production of baby what is that it is also controlling the enhancing the capacity of pollen grains. So स्पोरोपोलेनिन रो तीनटा स्ट्रक्चर देखे फंक्शन आम देखले स्पोरोपोलेनिन एक्जाइन भीतर जोड़ा थे स्पोरोपोलेनिन ता विषय में जानिले क्लियर इंटाइन पाखु जीवा तापरे इंटाइन बी इंटाइनटा जीवा इंटाइनटा कोथरे तयारी ना सेलुलोज और पेक्टिन दीटा कार्बोहाइड्रेट तयारी पॉलीसैकेराइड रे ताना गोटे सेलुलोज आ गोटे पेक्टिन ये दीटा तयारी कौन क्या तयारी ना सेलुलोज
एंड पेक्टिन सेलुलोज और पेक्टिन रे तैयारी होइछि यही पोलन ग्रेन जो करे इंटा पोलन ग्रेन कौन कौन प्रॉब्लम करोछि कौन कौन कराए टे देखिबा एटा लिबिया पड़ियो बाबा पोलन एलर्जी पोलन ग्रेन जो एयर रे जब या ना एयर बुलू थाए पोलन ग्रेन नाक पाक भीतर बसिले आखि भीतर पसिले एलर्जी आसे एलर्जी बहुत लोकंकर पोलन एलर्जी थाए कौन फर्स्ट वन इज पोलन एलर्जी पोलन एलर्जी लाइक कौन करे एलर्जी आजमा आस्थमा ये टाइप रो ये कराउची पोलन प्रोडक्ट्स पोलन प्रोडक्ट पोलन ग्रेन जो जिनस गुड़ा तैयारी होची वेरी इंटरेस्टिंग जिनस से कौन होची जो पोलन प्रोडक्ट्स गुड़ा जो एथलीट मानकू आ जो घोड़ा दौड़े जो रेस कोर्स घोड़ा ये मानू खाया देले से मानकर स्पीडटा ताकू टिके एनर्जेटिक से जाती टे भलो काम करे बहुत फ्रेश लगे बहुत अधिका कार्य करती कौन पोलन प्रोडक्ट्स क्या जाते हैं ना एथलीट्स को एंड रेस हॉर्स ये मान को पोलन प्रोडक्टा दि जाए तापर थर्ड वन इज पोलन भायाबिलिटी पोलन रो कैपेसिटी कौन थर्ड पोलन भायाबिलिटी इट एबिलिटी टू जर्मिनेट एबिलिटी गजा हाँपाई यहाँ थाए भायाबिलिटी देखते पोलन भायाबिलिटी फोर्थ वन इज मच मोर इंपोर्टाट फोर्थ वन पोलन बैंक बैंक माने शुणी थी बैंक माने पैसा पैसा जो रहे से बैंक कहते ना नो जेकोसी जिनिस को जो गंता कर गच्छित कर रखे गोटे बैंक कहुए ब्लड बैंक जदि बैंकर माने खाली पैसा रहे तो ब्लड बैंक तो पैसा रहा कथा बैंक माने पैसा नो बैंक माने कौन गोटे इंपोर्टाट जिनिस को आम गैदर कर गोटे जगह ठूल कर रखी बैंकिंग इज दैट क्लियर राइट सो ब्लड बैंक मनी बैंक बैंक मीन जो गुड़ा कहे प्रकृति मनी बैंक राइट सो ये पोलन बैंक कले पोलन ग्रेन गुड़ा जो रखा जाए कौट रखा जाए गोटे स्टोर कर रखा जाए केमी स्टोर कर गोटे एन2 लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा -190 डिग्री सेंटीग्रेड यू हैव टू रिमेम्बर द पर्टिकुलर नंबर टाक मन रखा पड़ो -196 डिग्री सेंटीग्रेड रे लिक्विड नाइट्रोजन रे पोलन ग्रेन गुड़ा को प्रिजर्व कर रखा जाए फॉर ए लॉन्ग पीरियड बहुत दिन पर्यंत रखा जाए से तापर पुणी बुणिकी मंजी गजा कर से जो रखिया प्रोसेसटा कहती क्रायो प्रिजर्वेशन कौन कहती क्रायो प्रिजर्वेशन दैट इज स्टोरेज ऑफ समथिंग अंडर वेरी लो टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग पीरियड दैट इज बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन राइट सो ये कौन कर पोलन बैंक रे आम कौन कर लिक्विड नाइट्रोजन को लेकर लिक्विड N2 को लेकर 196 डिग्री सेंटीग्रेड रे प्रिजर्व करछे कॉल क्रायो प्रिजर्वेशन CRYOPRESERVATION क्रायो प्रिजर्वेशन दिस इज ऑल अबाउट द इंटाइन एंड पोलन ग्रेन्स इंटाइन जानले एक्जाइन जानले तार पोलन ग्रेन सब स्पेसिफिसिटी स्पेशल फीचर्स जानले राइट ये स्ट्रक्चराली केमती डेभलप कर पोलन ग्रेनटा से देखा स्ट्रक्चराल कौन देखा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स बा पोलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट of what that is called as male gametophyte male
स्ट्रक्चराली केमिति आमे देखिबा आकु लिभेई पकाओ एतिक लिभेई दियो स्ट्रक्चराली आमे केमि देखिबा से इंटाइन एक्साइन केमिति काम करछंती देखो स्ट्रक्चराली देखिबा here is a nucleus and cytoplasm is there, so this is exine, this is intine, this is nucleus, this is cytoplasm. तापर कौन होची देखिनवा तापर केम डेवलपमेंट कौन होची देखो सेकेंड वन रे ये कौन करची ये दुटा भैक्यूल भली हो जाउची भैक्यूल्स और न्यूक्लियस तले रही जाउची सेकेंड वन रे भैक्यूल्स दुटा भैक्यूल होची न्यूक्लियस तले रही गला पूरा आखि नाक पूरा मनीष भली गला राइट मनीष मुंड भली थर्ड स्ट्रक्चर देखिबा थर्ड स्ट्रक्चर देखिया कौन होची ना थर्ड बेल को ये वैक्यूलटा एम रही होची ऊपर एटी थ्रेड्स क्रोमोजोम्स स्पिंडल फाइबर गुड़ा फॉर्मेशन होची टाणिक स्पिंडल फाइबर गुड़ा कौन कर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर कौन स्पिंडल फोर्थ वन तापर फोर्थ स्टेप रे कौन होची फॉर्मेशन होची क्लियर कट स्ट्रक्चर आसी जाउची कौन होची ना जो फोर्थ वन देखिबा हमें एटी गोटे न्यूक्लियस एटी गोटे न्यूक्लियस एंती गोटे डिवीजन हो जाउची ऊपरटा होची गोटे सेल हो जाउची तलटा गोटे सेल हो ऊपरटा भेजिटेटिव सेल तलटा जेनेरेटिव सेल दुटा सेल हो ऊपरटा ला भेजिटेटिव सेल तलटा ला जेनेरेटिव सेल क्लियर सो भेजिटेटिव सेल माने ता भीतर न्यूट्रिएंट्स थिबो फूड्स सब थिबो भेजिटेबल जंती भेजिटेबल माने खाद्य पनीपरिया सेमती भेजिटेटिव सेल रे ऊपरटारे कौन होची ना फूड्स रोची तलटा जेनेरेटिव जर्मिनेट हम राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड एटी पढ़ेली पोलेन ग्रेन सब पढ़ेली तार फंक्शन पढ़ेली तीन पार्ट आम कवर कले स्टामेन माइक्रोस्पोरांजियम एंड पोलेन ग्रेन डेवलपमेंट सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आज एतिकी थैंक यू जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्लास रे पुणी भेटिबा लेक्चर 2 रे।